Hello everyone. So this year is my friend Tanay, and he's actually a very good friend of mine because we met in Australia a couple of years ago for the first time, and then we just our friendship just sort of grew, and today we are sitting here in his apartment in Mumbai because I just wanted to visit him and check out this part of town. But we actually wanted to do the podcast because we were just like, fuck it, why not? Let's do it. So, but we wanted to talk about what we are interested in, and I feel like Tanay is very big on health and nutrition, and because he likes it, and he's very passionate about it. He's been following it consistently, and he's actually got a very insane body as well. He's very lean and ripped while eating, you know, cooking and eating at home. So I don't know. This is kind of a natural podcast. We'll see where it goes, and yeah, there you go, bro. Hey guys, my name is Tanay and Anirudh. Yeah, so I met him in Australia. We met in a place known as Revs, which is actually a fun place. I feel like um, it's worth a visit. Um, well, I feel like I take my life in a direction which I feel like I feel safe and I feel fresh. That's good. Yeah, um, very different and unique approach to life. Living a bit dangerously, but following your heart. Not many people can do that, and that's what I like about you. And like, you are not afraid to walk on your path, and maybe that's why we sort of connected and attracted each other and became friends. But it's a very interesting time right now, where I'm seeing this in a lot of my other friends, or people our age, that people are लोग बेसिकली डर नहीं रहे. लोग बोल रहे कि भाई, लोगों को वो कोविड के बाद वो रियलाइजेशन आ गया कि भाई एक ही जिंदगी है, और मतलब करो, वो कार लेनी है, लो, वेकेशन पे जाना है, जाओ, लाइक थोड़ा वो योलो वाला एटीट्यूड आ रहा है. YOLO वाला एटीट्यूड आई गेस लोगों को ये अवेयरनेस आ भी रहा है कि yes they have to live and live for themselves. And living for themselves is at the same time living with your family as well, living with your close knits. That's also a part of yourself. um, just because you're respecting yourself doesn't mean I'm disrespecting someone. um, this feeling of feeling good gives you the motivation to do things according to your goal. You have a goal in your mind, but you feel like if I don't do this, I'm sorry, I'll take my word back. um, you feel like something is giving you some energy. um, it's it's the entire universe. It's just spreading outside, and the universe in your mind. Sometimes when you think about things, it just spreads like an universe, and it's um, the only thing which you can control for yourself is your own self. um, the moment you start controlling yourself is the moment you understand that I am capable of doing things. And you also sort of, we were talking about this yesterday. You create, you have the power to create your own reality, and what some people believe that everything is written कि भाग्य लिखा होता है, but I don't believe that to be true. I think depending on the decisions and the choices that you make,
it affects where you are going in life. And I think even more important than that, bro, knowing who you are on a deeper level, giving yourself, like, I got that chance. I'll be honest, I got that chance to know myself because I left my home and went into Australia, and I learned a lot about myself. But if I wouldn't have done that, I would never have got the opportunity, to know myself and have interesting experiences, different experiences, experience and live in a different part of the world. And I feel like that's the beauty of traveling, like something which is normal here might not, might be very like alien to some other people. And like it's just different cultures, different people. That's diversity is the beauty of life, I think, if you know how to enjoy it. You know, I'm really sorry to interrupt, but then something you said and really it clicked in my mind. Um, so I take my life in a way that um, traveling traveling is also actually a part of it. Um, Traveling is actually, it makes you understand who you actually are. So I've lived in Australia. Um, I've lived in Australia for 3 years, and my experience um, in Australia was insane because I got to know who I actually am. I'm still learning each and every day. So it's the newness that actually keeps you alive. Um, um, And I think that's why people are, you know वो न्यूनेस, मतलब इवन व्हेन यू मीट समवन न्यू, वो एक्साइटमेंट होती है ना कि लड़के को मिलो या दोस्त को मिलो या लड़की को मिलो, वो और पब्लिक वो फीलिंग चेस कर रही है, इसके लिए इतना चीटिंग या अफेयर उफेयर हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट में रिलेशनशिप बहुत प्रिडिक्टेबल बन जाता है कि कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता है ना, नया नहीं हो रहा है कुछ। और इसके लिए जब, मतलब ब्रो, मैं ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया भी वापस आ रहा था ना, मैं एयरपोर्ट पे इतना खुश और एक्साइटेड था, मैं बोला क्या हो रहा है भाई, मतलब घर जा रहे हैं तभी भी, बस क्योंकि ट्रैवल तो कर ही रहे हैं ना, तो वो एक्साइटमेंट होती है। bro, traveling ka excitement is something which doesn't gives you that peace to sleep. So बचपन में जब ऐसे पिकनिक में जाता था, तब सिचुएशन ऐसा होता था कि मेरे को रात भर नींद नहीं आता था. Yes. So that is something that's an excitement, that's a feeling. But the moment I started maturing, I understood that um, the moment you start prioritizing your own self, it's that actually what makes you grow. Well, you have the choice. You always have the choice. बट कैसा है ना, ये बात तेरे को अभी समझ गई है, या मेरे को भी ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ। बहुत टाइम तक तो मेरे को ऐसे लगता, मतलब अपने पेरेंट्स ही अपना साइकोलॉजिकली और फिजिकली अपना वर्ल्ड होते हैं ना एक पॉइंट तक, तो वो जब तक तुमको खुद रियलाइज नहीं होता कि तुम्हारे एक्शंस, और मतलब तुमको फ्रीडम है, तुम जो करना है कर सकते हो, वो सही गलत। भाई मेरे को तो ऑस्ट्रेलिया में एक तीसरे चौथे साल में मेरे को ऐसे समझ गया था कि यार सही गलत, मतलब मैंने जज करना कम कर दिया चीज़ों को, पता है क्या? Well, that's a very good approach. Um, Judge karna is just an illusion, to be honest. I feel like नहीं, वो अपने सीन ये होता है बायोलॉजी में, सीन ये होता है कि I'm so sorry bro. सॉरी, नहीं मैं बोल रहा था, जज करने वाली जो चीज़ है ना, वो अपने को बायोलॉजिकली मिली है, क्योंकि जब अपन, यू हैव टू जज समवन इन ऑर्डर टू मेक एग्जीक्यूटिव डिसीजंस इन लाइफ, कि ये इंसान को रखना है नहीं रखना है मेरी ज़िंदगी में। तो वो, और या फिर ये चीज़ खतरा है कि नहीं, जब मतलब हम जो हंटर गैदरर थे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये मेरे ट्राइब का है कि ये कोई और ट्राइब का है, तो वो डिसीजन मेकिंग आया ही ना, तो वो हमारे सेलुलर लेवल पे है अपने वैसे सिस्टम में।
मैं इल्यूजन वाली बात कर, इल्यूजन तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, या फिर तेरा पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन कर फिर समझेगा। मैं एक एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहा था। बोलना बोलना। सो ऑस्ट्रेलिया में देयर वाज अ सिचुएशन वेयर हम लोग अब से बीच पे आते वर्कआउट करते थे, एंड उसके बाद वी यूज्ड टू गो फॉर अ डिप, एंड दैट वाज रियली and that was really like something which you can do after work, because work and life balance जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, it's something which is which I feel like that was my experience, so I'll tell my experience. And work and life balance के साथ तुम्हारे पास काफ़ी चीज़ें करने के लिए, and you get to understand your own self that yes, you are capable of doing things. The moment you start it, the moment is the moment you understand that yes, I can do it. वरना पुलअप्स ऐसे दिखता हार्ड है, बट तुम पहली बार जब हैंग करते हो, कुछ टाइम के बाद यू स्टार्ट पुलिंग 1, then 2, then 3 is the time you get motivated. मेरे को ऐसा लग रहा है तूने एक स्टेटमेंट में तूने 2-3 पॉइंट्स के बारे में बात कर दी। पहले तू जो मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो अलग अलग चीज़ें ट्राई की ना तूने, मेरे को भी सिमिलर एक्सपीरियंस था, और मेरे को ऐसे भी लगता है कि यार उधर एनवायरनमेंट या एक प्लेटफॉर्म है, मतलब समझ किसी को मार्शल आर्ट्स करना है तो उसके लिए इजीली एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्लासेस तुम ज्वाइन कर सकते हो। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, फॉर एग्जांपल, या आउटडोर चीज़ें करने के लिए बीच है, या सरकार ने बीच पे जिम बनाया है, सिंपल जिम जो फंक्शनल है। तो आई फील लाइक मेरा पॉइंट ये है कि भी एनवायरनमेंट भी बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट करता है, लाइक एक्सेसिबल है ना ये चीज़ें। अभी अगर मेरे को समझ क्रिकेटर बनने का है और मेरे को 100 किलोमीटर रोज जाना ही पड़ रहा है ग्राउंड के लिए, तो मैं नहीं दे पाऊंगा ना टाइम उसको। there are mad people there are mad people, and people literally take those steps. Yes, बहुत सारे लोग privileged भी है कि उनको फैसिलिटीज़ मिल गया है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो आते हैं वैसे, they travel 100 kilometers for their passion, वो एक्सेप्शन हो गया and they have given their life to it at the same time. So salute. exactly, they are very driven people with Yes, arts. passionate people, but if you want to grow up, I feel like you have to have um, some body language. Some body language. Yes, What way? body language is basically having confidence and your self-awareness. The more you are aware, the more you understand yourself, and तो कैसे अंडरस्टैंड, कैसे अवेयर, क्या कर सकते हैं अवेयरनेस बढ़ाने well, तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से इट्स वर्कआउट। वर्कआउट हम तुमको एक मोटिवेशन देता है दैट यस यू आर ग्रोइंग एवरी डे। तुम अपने आप को देखते हो, एंड जब तुम जिम में जाके जो फील करते हो एक स्ट्रेंथ, वो तुमको एवरी डे एक मोटिवेशन के जैसे मोटिवेशन के जैसे नहीं बोल सकता, इट्स एंटायरली अ मोटिवेट। जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ब्रो, लोगों को बेसिकली ये समझना है कि उनका गोल्स क्या है, कि क्लैरिटी होना चाहिए कि यस आई हैव अ गोल, एंड उस गोल के हिसाब से तुमको सारी चीज़ें तुम ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करोगे अगर तुम्हारा गोल है, बिकॉज यू स्टार्ट लाइकिंग इन द प्रोसेस। आई मीन तुमको प्रोसेस से प्यार में तुमको बहुत इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्पल तुमको वो गोल से प्यार है, तो तुमको गोल के जर्नी से ही प्यार रहेगा। सीन क्या पता है, मैं तेरी बात समझ पा रहा, बट मैं पता नहीं, मेरे को ये मेरे साथ अभी 2-3 हफ्ते पहले इंसिडेंट हुआ कि मैं आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली मैं किधर था, कोई पब्लिक प्लेस पे ही था पुणे में।
कोई रिक्शा वाला था या कोई था, वो मतलब उससे बात करके मेरे को ऐसे लगा बहुत क्लियरली, तू वो कॉन्वर्सेशन सुनता तो तेरे को समझ जाता कि ये ये बंदे को लग रहा है कि पैसा आ जाएगा तो लाइफ मतलब पूरी सॉर्टेड हो जाएगी, बट मैं अदर स्पेक्ट्रम पे था कि भाई मेरे पास बैंक में पड़ा है समझ 1-2 लाख रुपया, बट बाकी तभी भी अलग प्रॉब्लम है ही लाइफ में। तो अम, बात ये है ना कि पब्लिक को रिजल्ट चाहिए, पब्लिक को प्रोसेस, वो प्रोसेस से नहीं जाना, या मे बी उनको दे वांट द मनी बट दे डोंट वांट टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू गेट द मनी। और फिर क्या होता है, तुम 100% नहीं दे पाते हो। ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस की है कि 100% नहीं दोगे ना तो यूनिवर्स भी फिर रिटर्न्स, मतलब यूनिवर्स भी खुल के नहीं देगा, क्योंकि तुम जान छोक के नहीं डाल रहे हो। वेल 100% एक्चुअली तुम एक बाउंड्री सेट कर रहे हो बाय सेइंग इट। इफ यू लाइक इट नहीं ब्रो, जस्ट डू इट। 100% मतलब 100%, 100% मतलब लाइक वो क्या हो गया ना, 100% is basically मतलब तुम दिल खोल के काम कर रहे हो, तुम यू just open heartedly, don't think about the 100% because percent is again giving you a yes. So if you like it, just do it and do it consistently, and it's a good feeling. It's a good feeling. um, that's the reason you'll feel motivated because you're doing good for yourself. And when you do it for a while, it becomes a habit, and that habit actually makes you feel good. तू जो बोला ना कि इफ़ यू लाइक इट जस्ट डू इट एंड डू इट कंसिस्टेंटली, ये चीज़ मैं भी अपने लाइफ में अभी इसको कर कुछ कुछ चीज़ें कर रहा हूँ मैं, जो मेरे को पसंद है, जो मैं पैसे के लिए नहीं करता, जो मैं खुद के अपने आप के लिए करता हूँ। बट पूरी ज़िंदगी अपने आप के लिए जीना और उसमें से वो चीज़ को मोनेटाइज करना, ये प्रोसेस में अभी मैं चल रहा हूँ। एंड मैं ये चीज़ को और कमिटमेंट दूंगा। बट बहुत इंटरेस्टिंग, सही बात है बहुत। लोग इसको, आई थिंक ब्रो, सीन क्या है ना, अगर तुमको कुछ पता भी नहीं होगा ना तो तुम वो कर भी नहीं सकते। तो अगेन घूम फिर के फिर अवेयरनेस की ही पे ही बात आती है कि तुम, और अवेयरनेस एज इन सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस नहीं, तुम्हारे बिलीव्स क्या है, तुम क्या मान, व्हाट यू बिलीव टू बी ट्रू, व्हाट यू, जैसा अगर कोई लिमिटेशन या बाउंड्री डाल रहा है तुम पे, तो कैन यू, तुमको समझ में आ रहा है क्या कि क्या चल रहा है रिलेशनशिप में तुम्हारे पार्टनर के साथ, या माँ मॉम के साथ, या सिस्टर के साथ, या फादर के साथ। एवरीवन इज ट्राइंग टू डिफाइन और पुट, हर एक कैसा है, अगर दो सिक्योर लोग, अगर दो सिक्योर लोग है, सिक्योर एज इन की मैं अपने साथ अपने अंदर सिक्योर हूँ, मेरे को अननेसेसरी तेरे से कुछ नहीं चाहिए, और मेरे को मेरे मैं बस ये चाहता हूँ कि तू अब मेरे बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो वो मेरे लिए वो सिक्योर सिक्योर पर्सन हो गया। तो अगर सिक्योर पर्सन एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं ना तो उसमें ज़्यादा ड्रामा होगा नहीं और क्लियर कम्युनिकेशन होगा, जो है वो क्लियर क्लियर बात होगी। और अगर अग्रीमेंट में है तो दो बोथ ऑफ द पार्टीज विल फील रिस्पेक्टेड। बट कुछ अलग अलग तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल हो गया, एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल हो गया, और एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो गया। तो बहुत कम लोग सिक्योर वाले स्पेक्ट्रम में, कि सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग बहुत कम है। इधर पीपल आर ऑन द एंग्शियस साइड और ऑन द अवॉइडेंट साइड। एंड इसमें क्या होता है ना, एंग्शियस और अवॉइडेंट का एक बहुत टॉक्सिक, बिकॉज वो पोलैरिटी है उधर, तो दे सॉर्ट ऑफ कनेक्ट, बट वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है, समझ रहे हो। एंग्शियस एंड अवॉइडेंट का, Anxious and avoidant. Bro, I feel like avoidance. Avoidance अपने टाइम पे at that time they feel like overwhelmed, हाँ हाँ हाँ, and later on they kind of उनको फेस नहीं करना है ना वो इमोशन, दे आर yes डाउन। मेरे को ऑजी लड़के में बहुत दिखाई था अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल की, बस मतलब मैं जनरल ऑजी बंदी की बात कर रहा हूँ, नॉट yes टू बिट मोर अवेयर। yeah I understand bro. और मेरे को वो लोग प्रिविलेज भी बहुत लगे। Yes because population काफी कम है वहाँ पे, हाँ, और रिसोर्सेज और yeah resources बहुत है। भाई जान की भी बहुत
ह्यूमन लाइफ को रिस्पेक्ट करते हैं यार. नेचर कितना ब्यूटीफुल है ऑस्ट्रेलिया में. कितना उनके बीचेस वगैरह बहुत सुंदर है. लड़कियां भी सुंदर ही है बोल सकता है. और मतलब हवा पानी भी थोड़ा अच्छा है. पोल्यूशन कम है. बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन. अगर तुमको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहने की आदत है तो unless you have that there, you know, you will go through a phase where you have to start your life again. बट अगर कोई फैमिली के साथ अगर मूव करता है और ही कैन अफोर्ड इट तो फिर आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम. पैसा रहेगा तो आराम से रह सकते हो तुम. पैसा या अच्छा करियर चाहिए. um, पैसा और अच्छा करियर चाहिए तो ब्रो जस्ट what I feel like is um, follow your passions and make sure whatever you're doing just get to know it. Yes, just get to know it whatever it is. उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है यार. तुम फिर लिमिट कर रहे हो कि मैं कुछ चीज़ें ही सीखूंगा. जो भी रास्ते में आ रहे सीखते जाओ. यू कांट चेंज इट एट दैट टाइम. इंस्टेड ऑफ मैं दिमाग में 25 चीज़ें सोचूंगा कि यार मेरे को नहीं समझ रहा हूँ मैं नहीं करूँगा. करके देख ही लो. तेरा वो बहुत एक्सेप्टिंग एटीट्यूड है. मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कैसे आया बट यूनिक चीज है कि इससे पीसफुल रहेगा. दिमाग पीसफुल रहेगा. Yes, because I've spent most of the time in grounds by playing sports. Um, I've played most of the times. Building में भी मैं नीचे ही खड़ा होता था. And समर वेकेशंस में 2 महीने में सुबह से शाम तक तो बाहर ही होता था. तो I was really connected to myself as well since the start. So बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि मैं बिल्डिंग में नीचे पहुंच जाता था जल्दी खेलने के लिए. एंड मेरे बिल्डिंग के लोग आते थे आधा घंटा 45 मिनट्स. क्योंकि मैं 45 मिनट्स में तभी प्लान बनाता था नीचे पहुंच कर कि क्रिकेट खेलने का. तो मैं तभी वेट करता था ऑलवेज. पेशेंस तो था. उस टाइम पे सीन ये है कि यू गेट मोर टाइम टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ. सो ऐसे करते करते यू and if you're present at that moment you'll feel like you'll experience more, which is like the real life experience मतलब कुछ experiences करना नहीं. तुम बैठे हो. तुम सिर्फ बैठे हो and you're just having I mean like एक podcast है and it's just an experience. ठीक है. तो उस experience से तुमको समझ में आता है कि yes कि मेरे को आगे करना क्या है. लाइक वो एक्सपीरियंसेस ही तुमको अभी फॉर एग्जांपल उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करने की बोलूँगा बट फॉर एग्जांपल अभी मेरे को कुकिंग करना है तो मैं ऑटोमेटिकली आई विल मैनिफेस्ट ऑयल चिकन सैलड्स. सो उसके लिए आई विल मैनिफेस्ट सो आई स्टार्ट डूइंग इट एंड डूइंग इज मैनिफेस्टेशन and manifestation is doing. I'm really sorry. Doing is manifestation. That is also correct. Yes. I don't see anything wrong with it. Bro. So manifestation, it works when you're just doing it. Just doing it. Like for example, बात कर तो माइक पास कर दिया मैंने. अपने अगर तू ये सोचेगा कि मैंने माइक पास कर दिया. अरे मैं माइक पास करूँ कि नहीं करूँ, माइक पास करूँ कि नहीं करूँ, इसमें मेरा टाइम वेस्ट चलेगा. मेंटल में मेरे और ऐसे बुलबुले बनते गए. फॉर एग्जांपल ये ले बात. ये बात मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली तूने कि मेरा कैसा है ना. मेरा चीज़ें मैं सुनता हूँ तेरी बातें. मेरा चीज़ें अंडरस्टैंड करने का पर्सपेक्टिव अलग है. मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ कि
हम मतलब where did we get the bad habit of, where did we learn the bad habit of doing things with an expectation? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कहीं से तो आई है। ये सोचा है क्या तूने? ये अपने पेरेंट्स पेरेंट्स में भी है, सब में है ये वैसे तो। It's the surroundings. It's basic. Very few people can do things without attachment. In fact, when it was written in Bhagavad Gita, महाभारत में लिखा था कर्मण्य वाधिकार। Yes. It's the surroundings that affects us. But I guess as you mature and you being wise, I would rather forgive those mistakes and just grow, because that's yes. Just forgive them and you don't give them energy. So it's basically a good thing to actually move forward, and you can just grow on your own path and you feel free in your mind. So तेरा माइंड जब फ्री होता है तो मोटिवेशन यही चीज़ है, जब तेरा माइंड फ्री है, एंड उसके लिए यू जस्ट हैव टू डू व्हाट मेक्स यू फील गुड. Well, gift, well, it's a practice. It's a practice. तुम जितना अपने आप से जुड़े हुए हो, like being in the present moment. हर एक क्रैप, वर्कआउट का हर एक क्रैप. अगर समझ कोई जानता नहीं है कि अपने आप से जुड़े रहना, कैसे जुड़े रहे? म्यूजिक. तुम जब गिटार बजाते हो या फिर गाना गाते हो, तुमको ऐसा लगता है कि यस तुम खुद से जुड़े हुए हो एक रिदम में. सो वही रिदम है बॉडी का भी. बॉडी का भी एक फ्लो है, बॉडी का भी एक रिदम है. तुम बल्क भी वैसे होते हो, श्रिंक भी वैसे होते हो. सो एक फ्लो है, हर एक का अलग फ्लो है, हर एक का अलग फ्लो है. सो उसमें तुमको ये फाइंड करना है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारे हिसाब से तुम क्या कॉम्बिनेशन बनाते हो अपने लिए. You just need to make sure that you have your choices right. For example, if there are protein sources like chicken, fish, um, soybean, paneer, um, and there are a number of protein sources like Greek yogurt. Um, so the the moment you start eating these kind of stuff, these kind of things in your meals, you feel like um, you know your mind is very clear and you think with clarity, um, which actually is for me is working. And I'm not thinking like if it's working or no, but I'm just doing it because it's actually making me feel good. And the moment I start feeling good is, it's basically sometimes food actually makes me feel good for the rest of the day, because the moment I'm like after eating clean, so the at the time when I go to the gym, when I get good pumps and I feel lighter, I feel better, I feel the best at that time. And then you walk out of gym that you ate clean, you worked out, you got better pumps. That was a good day and a quality life. No, even like I go to the gym 3-4 times a week, try to, but if I make sure if I have gone to the gym, I will come home and मैं बोल रहा था कि जब जिस दिन मैं जिम जाता हूँ ना, आई मेक श्योर आई ईट क्लीन हेल्दी प्रोटीन, तो वो बात तो है. और अगर जिम से आके भी कोई ऐसे मैं अनहेल्दी खा रहा हूँ तो वो ऐसे लगता है कि मेहनत वेस्ट हो रही है मेरी, कि क्यों मतलब व्हाई डू यू वांना, क्योंकि डाइट का ही गेम है ब्रो बहुत. वेल, डाइट भी तुमको फिर डाइट का खेल तो है. इट्स लाइक तुम क्लीन खाते हो, तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारा ब्रेन भी अच्छी तरह से सोचने लगता है, स्टार्ट कर देता है, तुम्हारे ऑर्गन्स पॉजिटिव. बात सही है तेरी, बट किसी ने अगर अच्छा खाया ही नहीं, कोई वो ट्राई नहीं करना चाहता है, तो वो उसको अच्छी फीलिंग ही नहीं आएगी फिर.
वेल उसके लिए एक ही चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, मतलब yes, experimentation you have to you have to be open to newness and new experiences, as in like तुम automatically the next minute you have already experienced it, so it's new experiences, it's continuing, तुम अभी भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, ये भी तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस है नया वाला। तो अगर समझ कोई अपने पुराने बीवी से बोर हो रहा है तो फिर उसने न्यूनेस ढूंढना चाहिए। उसमें तुम्हारी इंटेग्रिटी भी सोचो, so you have your integrity, that you have your clarity in your life and purpose, so when you have a clarity, bro, you are more happy and you'll be more you're more on your path, on your purpose. yes, on your purpose, on your path, and you feel good. And rest of the things for me, I feel like people are chasing pleasure for it. People are chasing food, so not Yeah. even pleasure, people are chasing. But I won't say chasing is somewhat negative word for me. But I feel like people need more awareness for themselves, because they are living in a world where they see more of the outside energy more than the inside energy. But I don't know how to see outside energy. I only see inside energy in people. Like maybe before I was, but now sometimes I just look at. You see inside energy of the people because you see yourself from the inside, right? But now it's like I can't unsee it. Like you see, my experience is that मैं कभी कभी किसी को देखता हूँ, वो फेस पे है ना ब्रो, दिख के आता है कि ये इंसान के दिल में क्या चल रहा है। वो भले ही अच्छे कपड़े पहने हो, उसने स्टाइलिश हो, the moment you understand yourself is the moment you understand everything. Like, you know for the fact that yes, I like drinking coffee, so I would ask my family, would someone drink coffee? So it's easy as in like your mind is free. You always have a choice. people लोग भूल गए ये बात। You always have a choice in every moment. Yes, you always have a choice in every moment. You don't have to listen to anyone. Well, you have to listen to yourself, but you always have a choice. And but it also takes a lot of courage, bro, to especially in India, to make your own path or walk on your own path. उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बट हिम्मत लगती है वो चीज़ करने के लिए। रिवॉर्ड के लिए तो सोचो ही मत, जस्ट इफ यू लाइक इट, इफ यू लाइक द गोल, यू विल लाइक द प्रोसेस। सो वैसे नहीं है, बट रिवॉर्ड का बोलोगे नहीं तो पब्लिक करेगी। आज मैं पब्लिक को फिर से बोल रहा हूँ, पब्लिक यू हैव अ चॉइस। वो तो ठीक है, अपन ने बोल दिया उनको। यस, तुम्हारे पास चॉइस है, पर एट द सेम टाइम तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस यस मुश्किल है, मैं समझता हूँ, बिकॉज मैं अकेले रहा हूँ, एंड I feel lucky at the same time that I got all the privileges. But the moment you start living alone, तुमको समझ आता है कि तुम्हें क्या करना है. Like not living alone in the sense like you can handle your own self. Like घर पे भी you can cook your own food even if there's no one to actually cook food for you. So when you know to cook food, you start believing that if I put a drop of oil lesser in my pan, and I'll feel good about it, and it'll be still tasty and it'll be still healthy. You're eating the same thing. I would say replace cooking oil with ghee. Well, I yes, but well, I've tried my best to tell people that yes, cooking oil, like seed oil is not gonna good for your organs. But then people are getting aware, and I feel like people are getting aware more practically rather than
just understanding it. The moment सबके हाथ में आ गया ना, everyone can yes, listen to what the experts are saying. yes. So उसके वजह से भी बहुत फर्क and हर एक का different perspective है, हर एक का different point of view है. So it's human beings in the end. Human beings have different point of view and different perspective. And collective path पे तुम कभी जा नहीं सकता. या तो तुम collective path पे जाओगे या तो you'll be yourself. मतलब ऐसा कि either you can be yourself or you have to go on the collective, or you will go on the collective path. Yes. Just be yourself and तुम्हारे पास option है actually. And that's what is like people and वो it's spiritual connection is basically to just be connected to yourself in the sense you know you know that you need that thing for your own self that is giving you peace and happiness. That's your goal and that's what you want to achieve. You just start liking it, and the moment you start liking it is the time you start feeling good about everything. Like the moment you start eating clean, you feel good, and the moment you start eating salads, you feel good. Taste, yes, you can make really tasty salads. You can cook your own recipes, but the only thing which I follow is I like eating it as clean as possible, but not compromising with the taste. But I don't eat bland. Um, um, I make sure that there's some toppings. They should if they're wondering why he does that, they should look at your apps, and then they will be like, fuck yeah, I want this, and then that's when they'll do it. But yeah, I guess ये पूरा जब तक है ना वो ऐसा केला दिखा के, या एडवर्टीजमेंट में भी ऐसे ही करते हैं, वो क्या करते हैं ना, उनको पेन पॉइंट ढूंढते हैं एंड देन दे केटर, वो मार्केट ही ऐसे करते हैं प्रोडक्ट को कि साइकोलॉजिकली या इमोशनली तुमको ऐसा लगता है कि यार मेरा पेन पॉइंट, मेरा जो भी दर्द है अंडरलाइंग पेन, वो चल जाएगा, निकल जाएगा. तो इसके लिए पब्लिक कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस खरीदती है, पता है. तो वो अगेन इट टाइज बैक डाउन टू ये वाली बात कि लोगों को है ना रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट चाहिए हमको, बट उसके लिए जो करना पड़ेगा सैक्रिफाइसेस या जो पाथ पे चलना पड़ेगा वो नेसेसरीली कमिटमेंट नहीं है. तो वो सीन ये होता है ना, फिर उसमें उसमें क्या होता है, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है भाई. तुम यूनिवर्स को क्लियरली अगर इंटेंशन नहीं दे रहे हो कि तुमको क्या अट्रैक्ट करना है, क्या चाहिए, अगर उसमें कंफ्यूजन है तुम्हारे अंदर ही, तो फिर यूनिवर्स भी कैसे तुमको वो चीज़ देगा ना. यूनिवर्स के कंफ्यूजन्स, यूनिवर्स तुमको कुछ चीज़ें देगा. यूनिवर्स इज बेसिकली योर थिंग्स दैट यू हैव डन. Universe is basically the things that you have done for yourself. So तुम्हारा यूनिवर्स यही है. नो आई फील लाइक ब्रो यूनिवर्स ये भी है और ये भी फिजिकल रियलिटी भी है. सबकी एक अलग आइडेंटिटी है एंड सब यूनिवर्स है, सब एनर्जी है. सो सबकी एक अपनी फंक्शन, सबका एक अलग फंक्शन है. सो आई फील लाइक यूनिवर्स इज वन एनर्जी ऑफ एवरीवन. मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये अभी अपन जो पिछले 1 या 2 मिनट बात किए ना, ये पूरा एक अलग पॉडकास्ट का टॉपिक बन सकता है, क्योंकि इसमें तेरे को और मेरे को समझ है, क्योंकि अपना थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन और नॉलेज भी वो स्पेस में. Why we are more spiritually connected? Because we work out, and when you work out you are more connected to yourself and your own reps rather than you're thinking about anything else. At that time you're just, your mind is basically on the muscles and not on thoughts. And
The moment your mind start um, thinking about your thoughts, um, is the moment you just get into an illusion. And you know what else has got, और एक बहुत सिमिलर चीज़ है, जो विपासना मेडिटेशन है ना, उसमें भी वो क्या सिखाते हैं, पहले 2-3 दिन तो बस इधर ब्रीदिंग पे फोकस रखो बोलते हैं, और उसके बाद यू आर सपोज टू मूव योर अटेंशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो तू जब ये बोला ना कि जिम में भी तो अपन वही कर रहे, तो मेरे को ऐसा क्लिक हुआ कि भाई जिम भी स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है अपने साथ इन अ वे. Spiritual connection is everything. You are spiritual being. You are a spiritual being, so and you cannot change the fact that you are a spiritual being. It is what it is. So you cannot change the fact that you are a spiritual being. So accept it, and you'll be more happier, and you'll be more understanding about your own self, your own needs. Your relations will be happier. So you'll do things accordingly. So when you start feeling good, your relationships are good, even if you have done mistakes in your life. So make sure that when you convey it, when you confront it, it'll be actually better. And with my family, I feel like the moment I started telling them about what my life and what my routines are about, so they also start feeling communicating with me. And so as I told you earlier, that my mom, ever since I got back from Australia, I've been eating eggs and oats. And within a month, my mom also was, just by looking at me, she started like, "Can I try oats, please?" मैं ये चीज का क्लिप बनाने वाला हूँ, ये चीज वायरल जाएगी कि मम्मी बेटे को देख के मम्मी भी डाइट का खाना खा रही है. Yes. So this actually is Bro, I feel like I have to run now, but it was good. It was fun. We did it, and I've got it now. Let's. There are more things that we can talk about, and I feel like I've got lot of content, which I can use and cut and do all the social media stuff with. So I will end this here. Thank you, bro, for sitting, and it was good to have you on my first podcast.